सो नेक्स्ट डे हमने मूव इन किया फ्रॉम आवर प्रीवियस होटल टू जुमेरा लेक टावर्स मूव इन पिक में. एंड वो जो हमारा रूम बुकिंग था वो नॉर्मल था, बट इंडियन स्टाफ था. और जब मेघा ने उन्हें बताया कि शी इज़ RJ विद रेडियो मिर्ची, दे वर वेरी ग्रेशियस. उन लोगों ने हमारे को एक स्वीट में अपग्रेड कर दिया. एंड दिस स्वीट वॉज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज इट वॉज ऑन वन साइड द व्यू वॉज the main highway, the Dubai road, and on the other side the view was this, जहाँ पे हमारे को ये लेक दिख रहा था हमारे वहाँ से 24/7. Isn't it cool? Hey morning. जैसे हम सबको पता है दुबई was made around 1990, right? Around that period as a part of UAE, United Arab Emirates. इंटरेस्टिंग बात यह है कि 30 सालों में इतना ज़्यादा डेवलप किया, इतना जूम करके ग्राफ और इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइंड सिटी है, कंट्री है. मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिज़र्ट को कन्वर्ट करके जो ये ब्यूटीफुल सिटी बनाया है, जहाँ पर अभी आई एम पुट अप इज दिस होटल, ओके, एंड राइट ऑपोजिट द होटल देयर इज दिस आर्टिफिशियली क्रिएटेड लेक. एंड ऑल द मोर इंटरेस्टिंग एक बात यह है कि आप जहाँ भी जाओगे ना, आपको चौराहे पर बहुत ही अच्छी अच्छी साइकिल्स मिल जाएगी to hop on to. वैसे हम तो बहुत चल के जा रहे हैं यार. कल हमारे 25,000 स्टेप्स हो गए, आज देखते कितने हो रहे हैं. And we have covered this part, and this part. Today the plan is to cover this entire part and this part which is pending. So now we are at the Singapore Pavilion and this looks like inspired by Gardens by the Bay, I think. So let me see what it holds. हम लोग बस अंदर जा रहे हैं और देख रहे हैं कि सिंगापुर के पैवेलियन में क्या क्या है. बड़ा ठंड वाला महसूस हुआ ना, जैसे एंटर हुई. इट्स ऑल ग्रीन. वैसे 3 दिन से गर्मी नहीं थी, आज थोड़ा सा दुबई में गर्म लग रहा है, पर यहाँ आते ही ना पूरा बिल्कुल ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा है. Look at this. सो सिंगापुर पेविलियन में एंटर होते ही एक 360 डिग्री मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन था विच वॉज अबाउट हाउ दे आर बिल्डिंग सिंगापुर in middle of the nature without disturbing the nature. So that was the essence of that entire thing. And to beat the heat, ये लगा रखे थे हर जगह pavilion में, which was such a relief. So from inside the pavilion was 3 floors tall and it was made of 20,000 plants. जितना भी आप सामने देख रहे हो ना, all these plant saplings, there were 20,000 of them and that place was so green. कैमरा में कैप्चर नहीं हुआ है मगर अगर आप वहाँ पे खड़े होते तो आपको पता चलता कि it was such a green place to be at. By walking down the stairs, you save 15 watts energy, and by just not taking the lift. Good decision. Which can charge your smartphone entirely. Oh. So much of an energy. Go. More of stairs, less of lift. आफ्टर सिंगापुर नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वॉज नीदरलैंड्स पेविलियन, जो बाहर से बहुत ही एवरेज दिख रहा था बट फ्रॉम इनसाइड इट वॉज समथिंग.
वी आर द नेदरलैंड्स पेवेलियन। यहाँ पर वाटर, फूड एंड एनर्जी को कंबाइन करते हुए कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से पानी गिरेगा क्योंकि मैं अम्ब्रेलाज दी गई है, पर बोला कि अभी मत खोलना। सो आई थिंक वी गेट सम इन्फो ऑन द स्क्रीन इन अ व्हाइल। एंड अंदर जाते ही हमें पता चला कि उस अम्ब्रेला का क्या करना था। जस्ट वेट एंड वॉच। दिस वॉज समथिंग, ऐसा कभी कुछ देखा ही नहीं था। एंड दे वर यूजिंग दीज अम्ब्रेलाज फॉर प्रोजेक्शन मैपिंग विच इज़ सच वंडरफुल। एंड सबकी एक इंडिविजुअल स्टोरी उसके ऊपर प्रोजेक्ट होने वाली है अभी। Amazing, what a show this was. मतलब ना मल्टीमीडिया शोज हर जगह हो रहे हैं। इन लोगों ने ना पूरा वो अम्ब्रेला के ऊपर शोकेस करके बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस दिया। और एंड में एक वाटरफॉल हुआ जिसको क्लिक करना मैं भूल गई, बट आई थिंक इट वाज सुपर अमेजिंग। सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एट एक्सपो वॉज वर्चुअल पासपोर्ट्स वहाँ पे मिल रहे थे। डमी पासपोर्ट्स थे एक्सपो के, जिसमें आप जो भी कंट्री के पेविलियन में जाओ आप वहाँ जाके अपना स्टैम्प करवा सकते हो। सो एट द एग्जिट ऑफ एवरी पेविलियन देयर वॉज अ वीज़ा स्टैम्पिंग place, and these were dummy visas given on a dummy passport, which was very interesting. Like, people were getting it filled entirely. One crazy thing which was happening at Pavilion is Emirates का flight ऊपर से हर 15 मिनट में उड़ रहा था just for the branding purpose because they were the sponsors. So the next is the Italy Pavilion. एंड इसमें एंटर होने से पहले ही वो हमारे को 4 फ्लोर ऊपर एस्केलेटर से ले गए। सो एक्चुअली हम बॉटम से नहीं, टॉप ऑफ द पेविलियन से स्टार्ट कर रहे हैं पूरी जर्नी। सो साउंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। एंड बाहर से देखने में भी इट वॉज विजुअली वेरी डिफरेंट देन एनी अदर पेविलियन। इट वॉज मेड ऑफ रोप्स। सो इस पेविलियन में वन थिंग दैट वॉज डिफरेंट वॉज दैट देयर वॉज अ कंटिन्यूस गाइड विद अस, जो हमारे साथ थ्रू आउट द जर्नी फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट तक साथ में ही था। And the first thing that they're showing us is the sand watch, which was made by Italians way back in 5000 BC. Also, this windmill signifies the heavy reliance that Italy now has on renewable energy, or how Italy is now expanding and investing more in becoming a completely carbon-free country. These ropes that they have used, there are 17 kilometers of ropes made out of recycled plastic. This dome was here to make you remember that once upon a time, Italy was at the forefront and was a pioneer of everything in astronomy. I think they're talking about some 3, 4, 5,000 years back. Also, they were showing the ancient equipments for music, printing equipments and jewelry from the Roman Empire's time. So they had kept the real models there. This was one place where they were talking about Italy's space mission and what they are going to achieve over the next 25 years. Italian pavilion, and it is, I
think at the highest peak at the entire Expo. So it is on the top-notch place because we came via an escalator. And here you can see a train coming up. This is the exit part. So we saw atomic clock. Then one more thing we saw, the mathematician, Fibonacci. Then what else we saw? Fibonacci. This is the Israel Pavilion, and though it was small, it was a BAP experience. There is a live DJ, and I think something very interesting is going to happen. आप just देखते रहो. Somewhere around the world, a new idea is born. And another one on the other side of the world. It's everywhere. It's in the soil of the desert we come to life. In the knowledge we happily share. Let's go into a world of environmental responsibility. It's in the energy of the sun we learn to. The world needs more voices, more ideas, more connections. The world wants to hear your voice. Let's hear you. Yalla. This was almost a 5-minute long show. This is what I'm talking about. This is what we can do when we follow the same hopeful view. So I'm outside the Indian Pavilion, or it's like बहुत ही बड़ा सा बनाया है. So Indian Pavilion में enter होते the first thing you see is this small mini models of all the rockets and the satellites that India has recently launched. The entire ground floor was I think the half part of it was dedicated to ISRO, and ISRO had put up a very beautiful show. Also वहाँ पे एक लाइव गेम था जो हम लोग कैप्चर करना भूल गए, जहाँ पे आपको एक रॉकेट बना के उसे लॉन्च करना था विदिन 15 सेकेंड्स. The Indian Pavilion, जहाँ पर आगे इसरो का एक पूरा सेक्शन है. We actually assembled a rocket, और अभी यहाँ पर you can see yoga poses by the Prime Minister Shri Narendra Modi. और अब आगे के I'll take you around. Come. यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, पहले तो यहाँ पर एक लाइव योगा डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, और यहाँ पर एक पूरा गाना है जहाँ पर कैलाश खेर टू सोनू निगम टू अनुराधा पौडवाल टू आई थिंक शंकर एहसान लॉय, सारे के सारे 6-7 सिंगर्स आई सॉ. और आगे जो है वो हम देखते हैं, आई थिंक इट्स सम बॉटनिकल गार्डन जैसा कुछ सा बनाया है. यस, लेट्स सी व्हाट इट इज. Here is British India, here is British us. I think there is this Vaishno Devi temple. There is the 3D miniature of Rani ki Vav. There is Taj Mahal out there. और क्या था? I think yeah, that's it. That's about it. And there is this multimedia presentation across. ऑल्सो किसी भी और कंट्री में उनके लीडर्स का कोई मेंशन भी नहीं था, मगर ये तो इंडिया है. और इंडिया पेविलियन में अंदर से ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें बाहर थी. एक ही एलिफेंट और दूसरा एक इंडियन फूड. You think wait, don't show them. You think this is real? So I asked somebody कि यार लाइव एनिमल कैसे अलाउ कर दिया? तो बोले हाँ कर दिया. फिर पता चला कि it is actually not a real elephant. Check out. So well made, no? बिल्कुल. मेरे को तो कब तक ऐसा था कि रियल है. उसके पैर वहाँ पर जूम करेगा ना तो पता चलेगा. Zoom in there. हाँ देखा? Nicely made, no? और 192 pavilions में से there is just one pavilion which doesn't belong to any country or a company, and that is the Firdaus Studio by A.R. Rahman. Yes, A.R. Rahman had his own personal pavilion at the Expo. इंडिया पेविलियन से बाहर निकलती हमारे को दिखाइए एक स्पेस एक्स का मॉडल रॉकेट. आई थिंक दैट्स द USA का पवेलियन जहाँ पे हम जाने वाले हैं. बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू DP वर्ल्ड. DP वर्ल्ड इज़ अ ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी which is based out of UAE, and उनका खुद का pavilion was I think one of the most brilliant pavilion to see at the Expo. DP वर्ल्ड के अंदर ये पूरा स्पेस हाइपरलूप के अराउंड बनाया था.
They were talking about the Hyperloop as a technology and see what Megha is doing. Megha Hyperloop की बात कर रहे हैं, ध्यान दे, ध्यान दे. So at the center of DP World Pavilion was this 4-floor high LED screen which they had made. इतना बड़ा हमारा 55 इंच का टीवी स्क्रीन होता है, ये 4 फ्लोर का टीवी स्क्रीन था और एक लाइव शो चल रहा था वहाँ पे अबाउट द लॉजिस्टिक्स इन द फ्यूचर. Race for excellence has no finish line. We just visited this thing called DP World. I don't know if it's visible. बहुत ज़्यादा धूप है. That also has no finish line. वो देखो. What? Expo Explorer. Oh wow. और अब हम कौन से कंट्री जा रहे हैं रितम, कौन से पेविलियन? हम यूएसए जा रहे हैं. All right then.